Welcome viewer, welcome to my channel, and today lesson we are going to discuss about one of the important proof in canonical form in PDE, and that is b prime whole square is equal to 4a prime c prime is equal to b square minus 4ac and 2 Jacobian square, where a, b, c are not zero at the same time. And since this is the Jacobian whole square, and Jacobian should be defined in term of determinants, and here determinants का whole square, and this should be greater than 0. So अब हम इस बात को प्रूफ करते हैं कि ये जो हमारे पास b prime whole square minus 4ac, this one is equal to b square minus 4ac into Jacobian का whole square. इस बात को प्रूफ करने के लिए हम कोई भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करते हैं, जो कि इस फॉर्म में होगी a into partial u partial 2u over partial x square plus b into partial 2u over partial x partial y plus c partial 2u over partial y square प्लस f एंड सारी जो अगली इसके टर्म्स होंगी वो हमने एक फंक्शन की फॉर्म में लिख दी है, एंड इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग कैनोनिकल फॉर्म एंड बाय सम कैलकुलेशन. इफ यू वांट to discuss, I discuss it, and I may make a further video on it, and that is we can reduce it on this form where a is replaced by a prime, a bar, and b is replaced by b bar, and c is replaced by c, and here is not 2ab, here I just write 2, here it has just only b, not a 2b, and these sort of equations. यहाँ पे जो x है, x and y वो convert हो गई exi and eta में. So यहाँ पे हमारे पास जो a prime है वो equal होगा a into partial xi or partial x whole square plus b partial xi or partial x partial xi or partial y plus c into partial xi or partial y का whole square, and same as b and same as c. Mean this is gives us the relation between x and xi, xy and xi eta coordinates. So अब हमने ये चीज प्रूव करनी है कि b प्राइम का होल स्क्वायर माइनस 4a प्राइम c प्राइम इज इक्वल टू जो b स्क्वायर माइनस 4ac इंटू जैकोबियन का होल स्क्वायर. इस बात को प्रूव करने के लिए कंसिडर 4 स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड कंसिडर करें b प्राइम का होल स्क्वायर माइनस 4a प्राइम c प्राइम. नाउ रीसेटिंग द वैल्यू, that is what is the value we have. b प्राइम की पिछली स्लाइड्स पे मैंने आपको दिखाई कि वैल्यू है 2a exi I eta x. Exi x mean the partial derivative of xi with respect to x, and eta x mean the partial derivative of eta with respect to x, and plus b and this sort of value, and b का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, and plus 4a की वैल्यू पिछली स्लाइड्स you can just insert it here, and c प्राइम की वैल्यू ये वाली आ गई. नाउ यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है कि हमारे पास जो इक्वेशंस होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो फार्मूला होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a into c. This is the formula of a square plus b square plus c square. So just opening this formula, a square, and here a is 2a exi I eta exi x eta x, and a का square plus b square, and b is b square exi x eta y exi y and eta x का whole square, and same as c square is this one plus 2ab, and 2 is this, a is this one, and b is this one, plus 2b into c plus 2a into c, and minus is on their place, and 4 minus 4, and just multiplying these two terms we are getting a into a square exi x and exi x का whole square eta x का whole square plus a को इसके साथ मल्टीप्लाई करें a b exi x का whole square exi x into exi y, and similar all these terms multiplying together, and we are getting this required result. Now by simplifying these terms, that is taking the square of 2, that is 4a square exi x का whole square into eta x का whole square, plus opening these terms and multiplying with the a plus b का whole square formula, multiplying a plus b whole square formula, and also multiplying the b square terms with each terms. So we are getting b square exi x eta y whole square plus
2ab, and 2a is exi x eta y, and b is exi y eta x. So b is this one, and same as b square, we are getting this formula. And now here multiplying these two terms, 2 2s are 4, a xi x eta x, and also multiplying it with these terms, and we are getting with 4 a b xi square, 4ab xi x xi y eta x and eta y, and similar this term multiplying with these terms. And now 2 is 2b, 2 2 to the this is 4, and bc xi x eta y xi y eta y in this term, and similar this term is multiplied with this term. And now this terms is just replacing here. You can easily check it. 2 2s are 4, and 4 2s are 8. Xi x eta x xi y into eta y, minus, just multiplying minus 4 inside all these terms. With all these terms we are getting this equation. It's a little bit lengthy, but try not to confuse in it. Okay, next, just try to combine the similar term here. And first term we have 4a square xi x eta x plus b square xi x का whole square eta y का whole square minus 4. यहाँ पे पहले मैं जो लिख रहा हूँ वो xi x and eta x वाली terms एक साथ लिख रहा हूँ, and minus 4 ac xi x into eta x का whole square plus 2b square, which is I think which is kept in there, 2b square xi x eta y xi y into eta x, and similar terms plus 8 ac xi x xi y eta x and eta y, and all these terms you can easily do it. Combining together we are getting this result. This again little bit lengthy, but try not to confuse on it. And by after cancellation the similar terms which in positive and negative, they are cancelled to each other, we are getting this result. 4a square xi x eta x whole square plus b square xi x eta y whole square minus 4ac, and this sort of equations. Again, here these terms I write it at is, and now taking the common, that is we are here common is xi x का whole square eta y का whole square, xi x का whole square eta y का whole square, और अंदर हमारे पास रह जाएगा b square minus 4ac. And here you can see that xi x eta y xi y eta x यहाँ पे common इन दोनों में से, तो हमारे पास रह जाएगा 2b square plus 8ac, and this term is right at it is minus 8b square xi x, and इन दोनों में से अगर हम देखें तो common है xi y eta x, क्योंकि इन दोनों में से ये तो है बेसिकली सेम है, लेकिन अगर ये डिफरेंट, ठीक है, ये दोनों कॉमन आ गए, xi x into eta y का होल स्क्वायर, अंदर हमारे पास रह जाएगा b स्क्वायर minus 4ac and minus 4a xi x का होल स्क्वायर and eta x का होल स्क्वायर at it is. Now writing this term b square minus 4ac xi x का होल स्क्वायर eta x का eta y का होल स्क्वायर. Now इस टर्म में से उस टर्म में से हमने जब कॉमन लिए तो हमारे पास रह जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 8ac माइनस 4bc b स्क्वायर, तो ये हमारे पास बच जाएगा. बाकी हमारे पास जो टर्म बचेगी b स्क्वायर माइनस 4ac xi y का होल स्क्वायर eta x का होल स्क्वायर, एंड ये टर्म्स एंड फर्स्ट टर्म ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होगी. Now again considering the taking the whole square on this side, and इन दोनों का हम सिंप्लीफाई करें सबको and 2 कॉमन लेने तो हमारे पास रह जाएगा माइनस 2 कॉमन लेने तो माइनस 2 into b square minus 4ac, and हमारे पास xi x eta y xi y into eta x plus this terms at it is just by taking the whole square. And now if we are taking a common, there is b square minus 4ac in the whole terms, we are getting this result
exi x eta y का whole square minus 2 times the first term into second term in this one. And actually if you see that this is a formula of a minus b, where a is exi x into eta y and b is exi y into eta x. And again simplification, this is actually Jacobian. The exi x into eta y must be equal to exi y into eta x, because by the Febini's theorem which we are studied as an online classes in reanalysis 2, यहाँ पे बहुत सी जगह पे इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं पीछे कैलकुलेशन करते वक्त exi x into eta y, शायद आप कैलकुलेशन करते हुए आप उस पर कंफ्यूज हो जाएं कि exi x into eta y जहाँ पे भी आता है उसको हम लिख सकते हैं exi y into eta x. There's no difference between them. For watching this video, if you have any confusion, please comment in comment box. I will answer you. And if you need any further video on PDE subjects, you may just comment. Inshallah, I made on it. Thank you.